Hello guys, today we will learn object of the preposition, right? How can you detect one is object? Put the question word whom or what, you will get object. Let me give one example. Ramachandra killed Ravana. Put the question word whom, you can also place it who. Ramachandra killed Ravan, right? Okay, if you write who did Ramachandra kill, कौन लिखिल भल भाव पढ़ा हु डिड रामचंद्र किल क्वेश्चन मार्क, ठीक अच्छे हुम डिड रामचंद्र किल पिले दुईटी भर मझिरे जो नाउन फ्रेजटी रहिबो भल भाव मन रख दुईटी भर मझिरे जो नाउन फ्रेजटी रहिबो को सेंटेंस रे इंटरोगेटिव सेंटेंस रे एटा इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्ट होइची. If you find a noun phrase in between two verbs in an interrogative sentence, that noun phrase is called subject. ताले में ए noun phrase टाको subject बोली कहिबा. ताले रामचंद्र काहाकू बध करिथिले, रामचंद्र काहाकू बध करिथिले, राइट. योर आंसर विल बी व्हाट? रावण. ताले आंसर टा एटा आसला ऑब्जेक्ट. ताले होम टा एठी भी होची ऑब्जेक्ट. क्लियर? फर्स्ट थिंग क्लियर. यू मे से गुरुजी व्हाई नॉट लाइक दिस हु किल्ड रावण, किए रावण को वध करथिले. एट तो हु रहला एटा काहे कि ऑब्जेक्ट हबनी नाइ पिले एटा सब्जेक्ट हबो. लिसन एठी कोन कहिथिले. इफ यू फाउंड वन नाउन फ्रेज in between two verbs, first one is auxiliary and the next one is main verb, that noun phrase is called subject. But look at here, the whole verbal group is placed after the wh word. A wh word pore पूरा verbal group रही गला, that's why it is called subject. Who is called subject. Clear? Who killed Ravan? Who is called subject. But whom did Ramachandra kill? Ramachandra कहाँ को मिले? Ramachandra is called subject here. Clear? Whom is called object and here Ravan is called object. एटा तो बेसिक जिनसरा जानि पारिला. एबे हम आगु बुझिबा. देखो ऑब्जेक्ट चिन्ह पाइलो, whom पके जानिलो बा who पके जानलो. एबे what पके के हमें देखिबा. he bought, b o u g s, not brought, he bought a new car. put the question word what, या बदले what पकेइबा. आंसर कोन आसीबो? what did he buy buy. What did he buy? देखो पिले auxiliary main verb in between these two verbs you will find a noun phrase. he टा होची pronoun, he टा होची subjective personal pronoun, he टा एठी हबो कोन noun phrase आउ subject. what did he buy? से कोन किनिले. ताले what पकेले उत्तरटा कोन आसीबो? a new car. a new car is called object. what is also called ऑब्जेक्ट. ताले ऑब्जेक्ट केबि चिन्हि पारलो, जानि पारलो. एबे क्लॉज को जिबा लिबे दउछु पिले. देखो देयर इज नो मीनिंग इन. देखो आमे धरदमा कोन फर्स्ट क्लॉज किए रहउछंती नहीं. फाइनाइट वर्ब इज, फाइनाइट वर्ब से रो सब्जेक्ट की आसी गला यू. एटा तो बुझी पाइलो. व्हाट यू से, तुमे जहा कुओ. डज इट गिव यू ए कंप्लीट सेंस? Does it give you a complete sense? No. That's why it is called what? Subordinate clause. Clear? Let's talk about noun clause. ताले noun clause विषय रे कथा आबा. If you think that it is noun clause, put the answer word it or wh word what. There is no meaning in it. There is no meaning in it. यार किछि माने नाही, यार किछि मूल्य नाही. कोउतरे किछि माने नेबा मूल्य नाही. There is no meaning in what? कोउतरे नाही. This one what you say, जहा तुमे कुह से तो किछि माने नहीं, किछि मूल्य नहीं. ताले देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट कले उत्तर आछि, राइट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. बट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर ए प्रीपोजिशन. दिस ऑब्जेक्ट, दिस नाउन clause is placed after a preposition. That's why it is called object of the
प्रीपोजिशन तेणु आम ये कहले ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन पूर्व पढ़ते ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एटा होची ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन क्लियर ए फास्ट बुझी पाइल एबे नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से फाइनाइट वर्ब किए पे फाइनाइट वर्ब किए आम राइट वर्बल ग्रुप आसीगला आई एम सॉरी आई एम गोइंग टू से वर्बल ग्रुप एटा पे ला फाइनाइट वर्ब हो गला आम राइट पे केयरफुल अटेंशन टू ठीक है अटेंशन दियो राइट कोठी दियो obviously it is called subordinate clause if you think that it is noun clause put the question word what or the answer word it pay careful attention to it या प्रति attention दियो का प्रति what I am going to say जा मु कहया को जाउची जा मु कहिबी ता प्रति टिके attention दियो नहीं बुझा पड़िला if you put the question on what you will find object so this one is called object but it is placed after preposition that's why it is called what object of the preposition look at here all depends on सब निर्भर करुछि पिले कहा ऊपर करे how it is done verbal group is done finite verb is verbal group is done finite verb is how it is done that is called subordinate clause that is also called noun clause you know why all depends on what कहा पर निर्भर करुछि how it is done if you put the question or what you will get this answer right so it is called object and this object is placed after preposition so it is called object of the preposition on clear बुझा पड़िला।